Assalamu alaikum everyone and welcome back to the Linguistic channel. This is Hussain Siddiqui with you once again with an important topic. Narrations speech. This is the topic, you go crazy, you go mad, whenever you hear it, it's the most important part when it comes to writing, and it's a lot of things, right? In this video, we're not going to learn everything about direct and indirect speech, but the introduction of it. That what is a direct speech and what is an indirect speech. How to use it. What happens when you convert direct speech into an indirect speech, right? And how to do it, and so many other things. Stay tuned till the end of the video. Remember, the next video is going to be about the conversion, right? कि कौन सा डायरेक्ट स्पीच है, कौन सा टेंस, कौन सा मॉडल कन्वर्ट होता है, कौन सा टेंस कन्वर्ट नहीं होता है, कौन सा मॉडल कन्वर्ट नहीं होता है या होता है, और अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, और अगर होता है तो कैसे होता है, right? We'll be learning all these things in the next video, and in this video we'll be having the introduction and the basic things about direct and indirect speech. So without wasting more time, let's go ahead. Direct speech, also known as coded speech. Direct speech को सिर्फ direct speech नहीं कहा जाता, coded speech भी कहा जाता है. For example, if you've been asked convert this indirect speech into a coded speech, तो आपने घबराना नहीं है. इमरान खान, right? तो आपने घबराना नहीं है. सबसे पहले तो आपने डायरेक्ट समझ लेना है कि हाँ भाई ये कोटेड स्पीच का मतलब है डायरेक्ट स्पीच. कोटेड स्पीच का मतलब डायरेक्ट स्पीच होता है. The next thing, it is saying exactly what the person had said, which means that the verb tenses do not change. Means इसके अंदर same words use होते हैं, same चीजें use होती हैं. जैसे कि अगर किसी ने कहा, I will just be taking examples. For example, अगर somebody has said like, for example, the speaker is Amna and the listener is Abbas, right? So Amna says, I'm not fine. So Abbas comes to Ali and Abbas says, Amna said, I'm not fine. तो ये कौन सा स्पीच कहलाएगा? ये डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा. क्यों? क्योंकि इसमें सेम वर्ड्स आमना के अब्बास आगे कम्युनिकेट कर रहा है, और इसी वजह से इसके अंदर कोटेशन मार्क्स यूज होते हैं टू डिफर कि भाई दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट द पर्सन आई हैव हर्ड इज सेइंग, राइट? Okay, so the verb tenses do not change since we just copy what the person had said. Example, I am sick. मैं बीमार हूँ. Let's take an example like she. Suppose she said this, right? अब वो कोई भी हो, she is a speaker, right? तो आप जब direct speech में बात करेंगे तो you'll be saying she said I am sick. Now you see here, after she said there is a comma. You know why do we use it? We use this comma because to show continuation, right? कि भाई continue है sentence, इसलिए यहाँ पे comma है. Inverted commas आगे, फिर इसके बाद full stop जो आएगा sentence के आखिर में, और inverted commas के अंदर आएगा. Do you understand this? Right? So she said I am sick, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, I am sick, she said, right? Both the you can say the ways are correct. लेकिन अगर आपने यहाँ देखा हो तो यहाँ पे full stop she said के बाद आ गया है. क्यों? क्योंकि the sentence has ended here, right? तो I'm sick, she said. Another example, will you marry me? I'm not proposing any one of you, it's just an example, right? So he said, will you marry me, right? Or will you marry me, he said. अब देखें यहाँ पे भी question mark जो है, that is in the inverted commas, not out of that, right? उसी तरह से he said जहाँ पे sentence खत्म हुआ, यहाँ पे full stop आ गया. जहाँ पे sentence continue है वहाँ पे वो comma रहा. Another example, come here. So suppose the speaker is Asad, right? So Asad said come here. Alright, next. Come here, Asad said, right? तो यहाँ पे आपने सिंपल बना दिया.
उसके बाद व्हेन इट कम्स टू एन इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे कि अभी हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच को कोडेड स्पीच भी कहा जाता है, तो द सेम वे इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव बीन आस्क्ड कि भाई कन्वर्ट दिस कोडेड स्पीच इनटू ए रिपोर्टेड स्पीच, तो आपको ये बात जहन में होनी चाहिए, यहाँ पे कोडेड स्पीच का मतलब है डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब है इनडायरेक्ट स्पीच, राइट? तो नेक्स्ट थिंग, it does not use quotation marks because what the person had said does not need to be word for word. मतलब it is not the same thing. मतलब आप पहली चीज़ यहाँ पे कि verb tenses change होते हैं, दूसरी चीज़ मतलब tenses change होंगे. मतलब अगर present है तो that will go in past, right? और अगर present continuous है तो past continuous में हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ रूल कि भाई टेंस जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो पास्ट में चला जाता है. वो दैट विल बी लर्निंग राइट इन द नेक्स्ट वीडियो. बहरहाल इसमें कोटेशन मार्क्स की हमें ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसमें ज़रूरत ही नहीं है. अब अगर वही एग्जांपल लेते हैं, आमना ने अब्बास को कहा कि आई एम सिक एंड अब्बास ने अली को कहा कि आमना सेड आई एम सिक, तो आमना के वर्ड जब आप कह रहे हैं दैट इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू यूज़ कोटेशन मार्क्स. लेकिन जब आप कह रहे हो कि यार आमना सेड शी वॉज सिक या शी इज सिक, तो अब यहाँ पे आपने कह दिया ना कि भाई आमना ने कहा है कि वो बीमार है, तो इसलिए यू डोंट एक्चुअली नीड टू यूज एनी सॉर्ट ऑफ कोटेशन मार्क्स इन दैट, राइट? लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, राइट? द फर्स्ट एग्जांपल इज शी इज डर्टी, राइट? इट्स द सेम वे जैसे कि वही आमना वाली बात, अब्बास वाली बात, तो इट्स लाइक she said that जो यहाँ पे ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये है कि भाई ये ऑप्शनल है. मतलब कुछ लोग समझते हैं इट इज मैंडेटरी टू यूज दैट, दो इट्स नॉट, राइट? तो she said that या she said she was dirty. Next example is I'm going to the bank. So Asad said that he was going to the bank. जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें वर्ब टेंसेस चेंज होते हैं, तो यू सी शी इज डर्टी इज द प्रेजेंट टेंस एंड शी वाज डर्टी इज द पास्ट वन. आई एम गोइंग टू द बैंक इट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड ही वाज गोइंग टू द बैंक इज पास्ट कंटिन्यूअस. तो आप देख रहे हैं कि भाई व्हाट इज हैपनिंग, द टेंसेस यू नो आर चेंजिंग. और एग्जांपल लेते हैं, माय बॉस टोल्ड मी टू वर्क हार्ड. आई मीन द सेंटेंस इज इन इनडायरेक्ट, my boss had told me to work hard. Next, he can't come early, right? It is in ये सारे direct speeches हैं, red वाले, और ये सारे blue वाले जो हैं ये indirect speeches हैं. तो can जो है वो could में convert होता है, तो this is why it's going to be Asad said that he could not come early. Right? ये सारे changes you will be knowing in the next video, so don't be worried कि सर हमें तो ये पता ही नहीं है कि कौन सा टेंस किस में कन्वर्ट होता है, तो भाई हम ये कैसे करें, भाई हम वो कैसे करें. तो don't you worry about it. It's just like you know the next video will be uploaded in a day or two, so don't be worried about it. फिलहाल अभी इस चीज़ को समझिए कि भाई जब इनडायरेक्ट में आता है तो टेंस चेंज होता है, ठीक है? अब बारी एक एक्सरसाइज की. आपने जो रूल्स हैं वो जहन में रखने हैं कि भाई डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स आते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स नहीं आते हैं. दूसरा कि भाई इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज होता है. बेसिक ये है कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाता है, ठीक है? उसके बाद कॉमा जब सेंटेंस कंटिन्यू करते हैं तब आता है, और बस कोई ज़्यादा खास इतने मुश्किल रूल्स नहीं है. तो सबसे पहले भी आपने इस एक्सरसाइज में करना क्या है, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि भाई इसमें डायरेक्ट स्पीच कौन सी है, इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी है, और उसके बाद यू विल बी एबल टू डू व्हाट? यस, करेक्ट द रॉन्ग सेंटेंस. ओके, द सेंटेंस इज शी सेड दैट शी वाज फिक्सिंग टीवी. सबसे पहले तो अंडरस्टैंड कि भाई ये कौन सा स्पीच है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, ठीक है? तो यू मीन टू से इट्स इनडायरेक्ट, ठीक है? तो जब इनडायरेक्ट है तो इसमें गलती क्या हुई? वेरी गुड, इन्वर्टेड कॉमास नहीं आना चाहिए,
क्योंकि in indirect speech we do not use inverted commas. Next example is we will buy a new house, family said, right? Or my family said, right? अब उसने कहा कि भाई we will buy a new house. तो अब मुझे बताइए कि ये कौन सी स्पीच है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? ठीक है, इसमें देखें जो फर्स्ट सेंटेंस है वो किसके वर्ड्स हैं? यस, इट इज दीज आर द डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ द फैमिली. तो इसलिए व्हिच स्पीच इज इट? यस, इट्स अ डायरेक्ट स्पीच. तो अब इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ आएंगे? सोचिए. डू इट इन योर कॉपी और नोटबुक ताकि आप सही वाले को देख के तो सही कर सकें. ग्रेट. So the sentence is, we will buy a new house, comma, in inverted commas, both for my family said. That's it. Next, Arij said, let's watch the movie together. Right? तो अब इसको ये कौन सा sentence है? Direct है कि indirect? Obviously it's a direct speech. You can let's watch the movie together. These are the direct words of Arij. So that's it. The next exercise, his father told him that he had to manage his expenses carefully. कि भाई उसने अपने expenses जो हैं carefully करने हैं. तो जब उसके father ने कहा है तो उनके अल्फाज ये तो नहीं होंगे ना कि उसे करने चाहिए, ये ना तुम्हें करने चाहिए. तो ये कौन सी स्पीच हुई? फिर इसमें देखें प्रोनाउन भी चेंज है, सब चेंज है. Which speech is it you think? Yes, you're right. It's an indirect speech. इसमें inverted commas नहीं आएंगे. And the last one, the doctor told me that I need to rest. अब डॉक्टर ने ये तो कहा नहीं होगा I need to rest. डॉक्टर ने कहा होगा you need to rest. This is how it becomes an indirect speech. और इसमें भी quotation marks नहीं आएंगे. That's it for now. If you have any question, you are requested to ask me. Any confusion, you can just comment below. Right, and if any one of my students is watching this, you can ask me on the WhatsApp number. Right, see you tomorrow or in my next video actually. Till then, take good care of yourself. Allah Hafiz. For more videos, please subscribe our YouTube channel and don't forget to press the bell icon. Assalamu alaikum everyone and welcome back to the Linguistic channel. And this video is the third part of direct and indirect speech. The first one was about the introduction. The second one was about the verb tenses change. And the third one is about the modal verbs and some really important rules. So stay connected, and if you have not watched the first and second videos, I would recommend you to go and watch the video first and then come to this video and learn direct and indirect speech in the easiest way you can. So we ended our video, we ended actually our last video on this thing that if something is still true or happening at the time of reporting, what we do is we may use the same tense. इसका मतलब क्या था? For example, I'm wearing this t-shirt, right? And you come here and you tell somebody else that Hussain is wearing this t-shirt, right? अगर मैंने वो t-shirt अब तक पहनी हुई है तो you will not be changing the tense. जैसे कि हमारा रूल है कि present into past, right? And past into perfect, right? तो हम ये रूल यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे and the verb tense will remain the same. तो अगर मैंने t-shirt अब तक पहनी हुई है तो you're going to say the same guy, right? Hussain is wearing the t-shirt. You will not say Hussain was. There are some more examples. You say, my father is not fine. There can be two indirect speeches for this. Number one, he said his father is not fine. अगर उसके वालिद अभी तक ठीक नहीं हुए. And the second one, he said that his father was not fine. अगर अब उसके father ठीक हो गए. The same way, the other example is the teacher said, you need to work very hard. Right? तो इसके दो indirect speeches बन सकते हैं. अगर मुझे अभी भी मेहनत करने की जरूरत है तो I need to work hard, और अगर अब मुझे नहीं है तो I needed to work hard. Right? You see, the teacher said I need to work hard, or the teacher said I needed to work hard. Now, let's talk about some modal verbs. कि भाई कौन सा मॉडल जो डायरेक्ट में है अगर वो इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा और किस चीज में कन्वर्ट होगा. So let's see the examples of direct speech. Arif said he will play music. Arif said he can play music.
he may play music, he shall play music, he must play music, right? So we've got these 5 modal verbs इनको हम पढ़ेंगे कि indirect speech में इनका क्या होता है. तो will is converted into would, can into could, may into might, shall into should, and must into had to. Yes, if we already knew it. Okay, so here we go. So this is the conversion that we have कि ये सारे मॉडल, ये 5 मॉडल वर्ब्स इन 5 मॉडल वर्ब्स में चेंज होता है. Let's take the examples. For example, the direct speech was Arif said he will play music. तो indirect में हमें पता है रूल्स क्या हैं कि indirect में inverted commas हट जाते हैं, tense change होता है, model भी change होता है. That is optional. You want to use it, you use it. You don't want to use it, you don't use it. So Arif said that he would play music. Arif said he could play music. He might play music. He should play music. Or he had to play music, right? तो ये इस तरह से अगर मॉडल वर्ब्स ये होंगे तो ये उनके इनडायरेक्ट स्पीचेस होंगे. Moving on to the next part, there are following, like there are no changes to these following models. कौन से? Could, should, might and would. इन 4 मॉडल्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते. The direct speech examples are I could listen to music, he said. तो कुड जैसे मैंने बताया कि इसका कोई चेंज नहीं होगा, कुड ही रहेगा, बट प्रोनाउन चेंज होगा. इसका रूल भी हम इसी वीडियो में देखेंगे कि भाई कौन सा प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, वो किस में चेंज होता है. तो आई कुड प्ले म्यूजिक और सर हुसैन वुड अपलोड अ न्यू वीडियो ही साइड, राइट. तो इसका इनडायरेक्टली सेम होगा. जैसे कि पहले वाले का अगर हम देखें तो ही सेड दैट ही कुड लिसन टू म्यूजिक और सर हुसैन सेड दैट ही वुड अपलोड अ न्यू वीडियो. सो राइट, तो ये सेम रहते हैं चारों. उसके बाद प्रोनाउन चेंजेस. When making a reported speech, remember, reported मतलब indirect speech, quoted मतलब direct speech. Yes. Remember that the pronoun also changes. How? क्यों? वजह. इसकी वजह यह है कि जाहिर सी बात है जब एक बंदा बात कर रहा है, अगर मैंने कोई अल्फाज कहे हैं और कोई शख्स मेरे अल्फाज आपको बता रहा है, तो ही इज़ नॉट द वन हु इज़ द स्पीकर, आई एम द वन हु इज़ द स्पीकर. तो वो क्या करेगा, ही विल यू लाइक अगर मैं कहूँगा मैं हुसैन हूँ तो वो जाके थोड़ी कहेगा मैं हुसैन हूँ, वो जाके कहेगा कि वो हुसैन है, राइट. तो दिस इज वाई द प्रोनाउन चेंजेस. अब ये देखें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस और ये रहे इनके प्रोनाउन चेंजेस. नाउ यू सी द सेंटेंस इज हियर, आई एम हैप्पी शी सेड. सपोज करें उसका लड़की का नाम एलिजा है या अलीजा है या एमन है या व्हाटएवर, राइट. तो एमन सेड आई एम हैप्पी. तो एमन सेड एमन वाज हैप्पी या फिर शी वाज हैप्पी. यू सी कि वो आई किस में कन्वर्ट हो गया, शी में. यू ब्रोक द ग्लास, जोना सेड. तो जोना सेड दैट आई हैड ब्रोकन द ग्लास. देखिए यहाँ पे टेंस भी चेंज हुआ, प्रोनाउन भी चेंज हुआ, ठीक है. अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है जहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन भी चेंज हो रहा है. I have completed my work, she said. So she said that she had completed her work. क्योंकि if I say that she had completed my work, तो इसका मतलब हो जाएगा कि उसने मेरा काम कंप्लीट किया. उसने मेरा काम कंप्लीट नहीं किया. She actually completed her own work. All right? You getting this part? Okay. Now exercise, the last part. कि भाई change the given direct into indirect speeches. It's very easy. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, आप वीडियो पॉज करेंगे, आप उनके सेंटेंस बनाएंगे, फिर आप इसमें से क्रॉस चेकिंग करेंगे कि आपकी कितनी गलती है. तो आई कुक फूड मामा सेड. तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? द इनडायरेक्ट स्पीच इज मामा सेड दैट शी हैड कुक्ड फूड, बिकॉज पास्ट सिंपल इज into past perfect tense, and you see I is converted into she because mama is a female. Next, you may come in, he said. अब may किस में कन्वर्ट होता है इनडायरेक्ट में? You are right, in might, right. तो he said I might come in, right. It's going to be in I, and you know it's like that. I don't know why it's not here, but it's going to be he said that I might come in. Next, Parker said I live in Australia. Now you see, इसके 2 सेंटेंस अगर बाकर अभी तक ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो he lives, right, और अब नहीं रहता तो he lived. मैंने आपको बताया ना अगर up to the time of reporting the condition is still true or still happening तो आप उसमें same tense use करेंगे. तो you see I into he, lives or lived according to the rules.
Next example is, you must respect your parents, teacher said. So, the teacher said that I had to respect my parents. Though we all must respect our parents every day, right? So, the rule hai, is why we have converted, you see, you into I, you're into my, and must into had to. The next example, which is the last one actually, Zain and Abbas said, we are playing football. अब आप इसको convert कीजिए. Okay. अब Zain and Abbas, they are two, तो we किस में convert हो जाएगा? They में, right? So, and present continuous into past continuous. Perfect. So they said they were playing football. Right? So you see, Zain and Abbas into they, we into they, present continuous into past continuous, and that's it. I hope you have clearly understood. अगर फिर भी कोई सवाल है, just you can ask me directly in the comments, or if you're one of my students, you can just text me, ask me in your class or whatever. Right? I hope everything is damn clear to you, and I'm looking forward to you in my next video. Good luck. The next video of Direct and Indirect Speech will be about interrogatives, कि इसमें yes or no questions का interrogative कैसे बनता है, WH question words का interrogative कैसे बनता है. So stay tuned. Keep watching, keep learning. Allah Hafiz. For more videos, please subscribe our YouTube channel and don't forget to press the bell icon. Assalamu alaikum everyone, and welcome back to the Linguistic channel. This is me, Muhammad Hussain Siddiqui, with you right here, right now, again with an amazing another topic, which is about changing direct into indirect speech. As in the last video we studied what is a direct speech and what is an indirect speech. In this one we'll be learning that which tense is converted into what tense and how these conversions are done, right? So stay tuned till the end of the video so that you don't miss any important part. So without wasting more time, let's start the video. So the first thing, when we change direct into indirect speech, the verb tenses usually change. जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो जो टेंस होता है वो आम तौर पे चेंज होता है. मीन्स इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू चेंज द टेंस, राइट? उसके पीछे भी एक रूल है, वो वीडियो के आखिर में पता चलेगा कि वो क्या रूल है, किसकी वजह से टेंस चेंज नहीं होता है और तो कैसे पता चलता है. बहरहाल, तो when you just convert it direct into indirect, the verb tense changes. Next, ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है कि भाई when we report something we need to go back a tense. मतलब जाहिर सी बात है, जब हम किसी को कोई बात माजी की बताएंगे तो हमें पास में ही जाना पड़ेगा ना. तो अब in the next slide we are going to learn कि भाई डायरेक्ट स्पीच में कौन सा टेंस आ रहा है तो इनडायरेक्ट में कौन सा आएगा. So as you see here, we have written here 4 tenses. One is present simple, the second one is present continuous, the third one is present perfect, and the fourth one is present perfect continuous, right? So let's see कि कौन सा किस में convert होता है. So it's easy. Present simple tense is converted into past simple, present continuous into past continuous, present perfect into past perfect, present perfect continuous into past perfect continuous. अच्छा, अगर आपके tenses पक्के नहीं हैं, means if you're not very good at tenses, you can go to my other videos and learn tenses. बहुत आसान तरीके से उनकी definitions के साथ, or it's like one word or two word definitions के साथ वो पढ़ाए गए हैं. It's just very easy. बहरहाल, तो now let's take some examples. For example, अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको एक सेंटेंस दिया गया है कि आरिफ said he loves music, right? तो इसको पास्ट सिंबल में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? रूल्स अपने जहन में लाइए जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे कि भाई इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स यूज नहीं होते. तो इट्स गोइंग टू बी आरिफ सेड ही लव्ड म्यूजिक. यस. प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर देंगे तो ही इज प्लेइंग म्यूजिक हो जाएगा. दैट आरिफ सेड दैट ही वाज प्लेइंग म्यूजिक. Present perfect, he has played, he had हो जाएगा, and present perfect continuous, he has been playing, will be into he had been playing.
नाउ यू सी हियर द एग्जांपल्स, राइट. ये जो दैट मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शनल है. मीन्स कुछ लोग समझते हैं कि इट इज़ मैंडेटरी, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी एट ऑल, राइट. यू कैन सिंपली यूज दैम. I mean, if you want to use it, use it. If you don't want to use it, don't use it. Right? Is that clear till now? Perfect. Moving on to the next slide. कि भाई अच्छा present simple तो past simple में convert हो रहा है, लेकिन ये past simple किस में convert होगा? और ये past continuous और ये past perfect और ये past perfect continuous किस में convert होगा? So guys, let's say past simple is converted into past perfect. जब डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में करेंगे, अगर पास्ट सिंपल का टेंस होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा. पास्ट कंटिन्यूस होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा. लेकिन अगर अब पास्ट परफेक्ट होगा तो वो इनडायरेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट ही रहेगा. एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एज वेल विल रिमेन इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि देयर आर नो चेंजेस इन दैट. लेट्स गो फॉर सम एग्जांपल्स. हमने वही पिछली एग्जांपल्स ले ली कि अगर इट्स लाइक ए पास्ट टेंस के आरिफ सईद ही लव्ड म्यूजिक, right? So it's going to be Arif said that he had loved music, right? Or in past continuous it's going to be like Arif said he was playing music, and so it's going to be Arif said that he had been playing music, right? तो आप देख रहे हैं कि दूसरे टेंसेस में there are no changes, excluding जो inverted commas है वो हमने यूज़ नहीं किया. ठीक है, बाकी दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है. The last one of this part of the video, it's a warning. What is that warning about? If something is still true or happening up to the time of reporting, then we may use the same tense. मतलब कि अगर, जैसे कि हम पिछली एग्जाम्पल्स पे लाते हैं, अगर हम इस एग्जाम्पल पे आ जाएं अपनी पहली वाली पे जिसमें लिखा हुआ है कि आरिफ said he loves music. अगर आरिफ को अब तक म्यूज़िक से मोहब्बत है या उसको अब तक म्यूज़िक पसंद है, तो इट्स गोइंग टू बी, मतलब वो इनडायरेक्ट में भी रहेगा कि आरिफ सेड दैट ही लव्स म्यूज़िक. बाकी इसकी जो मज़ीद एग्जांपल्स हैं विल बी गिवन टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो. जब तक इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस, काइंडली गिव मी अ थम्स अप, लाइक द वीडियो. और अगर कोई चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है, you can just ask me in the comments below, and if any of my student is watching this video can ask me in private, right? So stay tuned, keep watching, keep learning, have a good life ahead. Allah Hafiz. For more videos, please subscribe our YouTube channel and don't forget to press the bell icon. Assalamu alaikum everybody, welcome back to the Linguistic channel. This is me, Muhammad Hussain Siddiqui, your trainer, and today we'll be talking about changing direct into indirect speech part 2 and yes or no questions with WH questions. कि जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या होता है, जो WH क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या होता है. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट थिंग, व्हाट हैपेंस टू दीज वर्ड्स व्हेन दे आर कन्वर्टेड इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच. टुडे इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, यस्टरडे क्या हो जाता है, नाउ क्या हो जाता है, नेक्स्ट वीक क्या हो जाता है, टुमारो क्या हो जाता है. तो here it is, what happens to them, right? So today is converted into yesterday or that day. अब इसके पीछे वजह क्या है, ऐसा होता क्यों है कि टुडे यस्टरडे में हो जाता है या दैट डे में हो जाता है. द रीजन इज वी नो दैट व्हेन वी कन्वर्ट ए डायरेक्ट इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच, द वर्ब टेंस चेंजेस. फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट, पास्ट सिंपल इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट. तो उसी वजह से टुडे, व्हिच मींस आज का दिन, विल बी कन्वर्टेड टू दैट डे और यस्टरडे मतलब उस दिन. यस्टरडे into the previous day or the day before, मतलब परसों. Now means then. Next week मतलब the following week. अच्छा, why following week? इसलिए क्योंकि जिसने पहले ये बात कही होगी कि next week, तो अभी जब आप वो बात कोट कर रहे होगे या रिपोगे, तो it is going to be the following week, मतलब वो आप इस week में बात कर रहे हो. Tomorrow means the following day. Suppose I am a teacher. So
आई एम अ टीचर टुडे, किसी ने कहा, तो उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी शी सेड शी वाज अ टीचर दैट डे। अगर मैं टुमारो की बात करूंगा तो शी सेड शी विल बी अ टीचर, right? So she said she would be a teacher the following day, right? This into that, here, there. Here are some examples. ये कुछ examples हैं. जैसे कि it's Arif's birthday today, Munif said. तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि present is converted into past, तो it is हो जाएगा it was Arif's birthday, और today हो जाएगा that day. ठीक है? Next, mom said you must clean this house now. So must किस में convert होता है आपको याद है? हमने पढ़ा था in our last video. Must is converted into had to. अगर आपको याद नहीं है तो बहुत बुरी बात है. You must be practicing these all things ताकि आपको ये चीजें जहन में रहे. तो mom said I had to clean that house then. That this into that, now into then. You see? Next we have an example. I like this movie so much. He said. So he said he liked that movie so much. And this is the last example. I will have a meeting here. So Huzaifa said that he would have a meeting there. Now what happens when we convert, when we convert a question into an indirect speech? ये इसका फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है. WH क्वेश्चन के बाद नाउन आ जाता है और वर्ब आ जाता है. यूजुअली हम जो क्वेश्चंस बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं कि WH क्वेश्चन होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर नाउन होता है मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और उसके बाद वर्ब या कुछ भी. ठीक है, तो वेयर विल यू स्टे? द डॉक्टर आस्क्ड. व्हाट इज ही ईटिंग? शी आस्क्ड. लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी लाइक जो WH क्वेश्चन होगा वो शुरू में ही रहेगा, उसके बाद नाउन आ जाएगा, मतलब वेयर के बाद विल नहीं आएगा, वेयर के बाद यू आएगा. तो वेयर यू विल स्टे, हेल्पिंग वर्ब इसके बाद रहेगा लेकिन वो यू के बाद आ जाएगा, मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा बिकॉज इट विल नो लॉन्गर रिमेन अ क्वेश्चन, बट स्टिल इट्स अ क्वेश्चन क्योंकि फॉर्मेशन के हिसाब से क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसीलिए इसमें से क्वेश्चन मार्क हट जाएगा. इफ आई एम गोइंग टू फास्ट लेट मी बी स्लो. दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है व्हाट इज ही ईटिंग. अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है तो ये किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट कंटिन्यूअस. वेरी गुड. फिर हमारा क्या रूल है? WH क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसके बाद नाउन आ जाएगा. यहां पे नाउन क्या है? ही, ऑफ कोर्स. तो व्हाट ही हो जाएगा, इज ही के बाद आ जाएगा, ईटिंग आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा. सो हियर आर द एग्जांपल्स कि भाई she said what I was eating, sorry she asked, the doctor asked where I would live. क्योंकि will would में कन्वर्ट हो जाता है तो इसलिए यहाँ पे will would में हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में वो was हो गया. उसके बाद क्वेश्चंस विद डायरेक्ट इनडायरेक्ट में yes और no क्वेश्चंस में क्या आता है. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ यूज if और whether. या तो if आएगा या whether आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे. either you're going to use if or you're going to use whether. ये yes और no क्वेश्चंस में होता है. अब भाई yes और no क्वेश्चंस क्या होता है? जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं आर यू अ टीचर, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? यस आई एम या फिर नो आई एम नॉट. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर यू डूइंग, तो आपका जवाब डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, फिर वो आपका आंसर यस और नो में नहीं आएगा. तो वो जो हमने WH क्वेश्चन देखे दे वर द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, इसमें आप डिस्क्राइब करते हो, और यस और नो क्वेश्चंस में आप या तो हाँ बोलते हो या ना बोलते हो. एग्जांपल्स अब यहां लिखा हुआ है विल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, द डॉक्टर आस्क्ड. तो अपनी फिक्र करोगे. तो वी नो द रूल, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस. द डॉक्टर आस्क्ड वेदर आई वुड टेक केयर. यू सी द रूल इज द सेम. यू पहले आ गया, आई मीन आई पहले आ गया क्योंकि यू आई में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया वुड, राइट? विल हैज बीन कन्वर्टेड इनटू वुड. उसने डू यू हैव अ पेन, she asked. So it's going to be like if I had a pen. You can either use here would or whether I had a pen या फिर if I had a pen. दोनों ही बिल्कुल सही हैं. Now it's time for reporting verbs. Said, told and asked are the most common reporting verbs. जब हम कोई चीज रिपोर्ट करते हैं, मतलब किसी चीज को हम इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं, तो इट गोज लाइक दिस. लेकिन उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं.
For example, invited, offered, suggested, advised, accused, begged, ordered, promised or explained. इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो you can use any one of them depending on the situation. अगर किसी ने आपको इनवाइट किया है तो you'll use invited, ऑफर किया है तो offered, सजेस्ट किया है तो suggested, suggested advice में कोई खास फर्क नहीं है तो advised, accused, begged and so on. Exercise. Now let's do a small exercise as we always do in the end of a topic. So, do you have any pens? The teacher asked. अब इसका क्या होगा? We know it's going to be, it is, पहले तो ये देखें ये yes or no question है, कौन सा है? Perfect, yes, that is yes or no question. Yes or no में हम यूज करते हैं if या whether. अच्छा, अब हमारे पास रूल क्या है कि भाई हेल्पिंग वर्ब जो है नाउन के बाद आएगा और क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं आएगा, तो इट्स गोइंग टू बी व्हाट? यस, टीचर आस्क्ड इफ आई हैड एनी पेन्स, या फिर टीचर आस्क्ड वेदर आई हैड एनी पेन्स, दोनों सही हैं. उसके बाद यहां पे है यू शुड फिनिश नाउ. अब आपको याद होना चाहिए कि भाई ये यू शुड फिनिश नाउ, शुड किस में कन्वर्ट होता है? शुड कन्वर्ट होता है किसी में भी नहीं, बिकॉज़ शुड रिमेन शुड, फिनिश विल बी फिनिश. नाउ, अब ये नाउ किस में कन्वर्ट होगा? बॉस ने ऑर्डर किया है कि भाई अभी तुम्हें खत्म कर देना चाहिए, तो बॉस ऑर्डर्ड दैट आई शुड फिनिश देन. सही है? या फिर वेदर. उसके बाद हमारे पास है हु आर दीज पीपल. अब ये WH क्वेश्चन है तो इसमें क्या होगा? प्लीज बनाइए खुद से. दीज कहां चला जाएगा? पहले आ जाएगा, ठीक है. आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा. तो ही आस्क्ड हु दीज पीपल वर, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी दिस वे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज did you like, it's not life, it's like, sorry, it's a typing mistake. So did you like the food? Host asked. So host asked if I had liked the food. ठीक है, या फिर whether I had liked that food. उसके बाद we have the last example which is I went to buy this dress. My cousin told. अब मुझे देखिए कि भाई ये कौन सा टेंस है. ये पास्ट सिंपल है, परफेक्ट. पास्ट सिंपल इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट, यस, पास्ट सिंपल इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा. दिस किस में कन्वर्ट होगा? दैट में. और यस्टरडे किस में होगा? द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, राइट? तो उसको कन्वर्ट कीजिए खुद से. Here we have the answer. My cousin said that he had gone to buy that dress the day before. Right, so this was the last example of the day. Hope you're enjoying your life, enjoying the winter season. Good luck, and this is the end of the topic. I hope कि आप लोगों को ये चीज properly समझ आ गई हो. See you in my next video. Take good care of yourself. Allah Hafiz. For more videos, please subscribe our YouTube channel and don't forget to press the bell icon.